Hi everyone, welcome to another episode of the El Clasico Football Hub. And yes, we have achieved a major milestone of getting 10,000 plus views across all our videos and shorts. So thanks for showing your love. And if you haven't subscribed already, do subscribe the channel for this El Clasico banter. So first thing first, let's talk about Madrid versus Madrid. It seems like Madrid is no more just fight. Madrid last night was white as well as red. And एक बार अपने नोट्स ओपन करो कि आज तुम्हें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं इस मैच के लिए. नहीं यार, इतने ज़्यादा नोट्स तो मैं लिख ही नहीं पाया क्योंकि मेरे नोट्स मेरे आँसुओं से भरे हुए थे। बट या टफ डे एट द ऑफिस। अ 5-2 विक्ट्री फॉर एटलेटिको एट द मेट्रोपोलिटानो। अ, मतलब यार क्या ही बात करूँ अभी। बट या सो लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स टू टॉक अबाउट बट I would hate to simplify and say कि it all came down to intensity. I think Atletico Madrid played with a lot of intensity. It eventually came down कि who wanted to win the match more. उनके पास I think ज़्यादा reasons थे. Motivation था. Last time I think UCL से knockout किया था Madrid ने Atletico को. तो I think इस साल इनका start भी अच्छा नहीं हुआ था. They had won I think just 2 games out of 7. तो I think they came with a plan. एंड पता नहीं हर साल क्या होता है एटलेटिको मैड्रिड को, बाकी हर टीम से हारेंगे जाके वो। अभी लिवरपूल से जाके हारे हैं। अभी अगला मैच भी देखना ज़रूर हारेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू रियल मैड्रिड पता नहीं क्या हो जाता है। इनकी कोई ड्रग टेस्टिंग होनी चाहिए। हमारे अगेंस्ट कुछ अलग ही लेवल पे खेलते हैं ये। बिकॉज़ तू भी सोच यार व्हाट व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम एटलेटिको स्कोर्ड 5 गोल्स अगेंस्ट एनीवन एनीवन मैं कह रहा हूँ ला लीगा में भी, है ना? बट व्हेन इट कम्स टू मैड्रिड वो कुछ हो जाता है इनको, राइट? At the बट same क्रेडिट time, you don't play well in Metropolitan. या उनके वो स्टेडियम थोड़ा पे आई थिंक एटमॉस्फेयर भी हाँ। लास्ट हुँ, 4 मैचेस में एक भी नहीं जीते हो. एंड वो एटमॉस्फेयर भी वो ऐसा क्रिएट कर देते हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ राइवलरी एज़ वेल सेम सिटी में भी है, वो कोर्टोआ वाला भी एंगल आता है जब उसके बाद बॉल जाती है तो बू करते हैं वो, राइट? बट आई थिंक क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आई थिंक दे वर द बेटर टीम, दे वांटेड द मैच मोर, बट फ्रॉम अ मैड्रिड्स मतलब रियल मैड्रिड्स पर्सपेक्टिव आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट मेजर टेस्ट जो हम देख रहे थे ऑन द शेड्यूल एंड वी फेल्ड मिजरेबली, वी हैव टू एक्सेप्ट, which again goes to point out कि there are gaps in implementation जो हमने शायद फर्स्ट वीडियो में भी बात किया था इस चैनल पे, राइट? कि when I had predicted कि first half of the season के अंदर Madrid is going to be decent against mid-table teams, but we can't really compete against the Barças and the Liverpools of the world, right? तो उस सेंस में आई थिंक वो सेकंड हाफ में आएगा व्हेन वी विल बी एबल और वी विल बी इन अ पोजीशन टू compete अगेंस्ट द बिग टीम्स। वो चीज़ दिख रही है कि अभी वो इम्प्लीमेंटेशन फेज स्टिल अभी डब्ल्यूआईपी है, राइट? बट हैविंग सेड दैट आई थिंक दिस इज स्टिल अ ब्लिप। मैं इसको बहुत बड़ा वो नहीं सोचता कि मेजर क्राइसिस हो गया। दिस इज जस्ट अ ब्लिप। गुड थिंग इज कि दिस हैज कम अर्ली इन द सीजन सो दैट वी कैन कैलिब्रेट, और अगर कुछ मतलब कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो वी कैन चेंज अर्ली ऑन, राइट? सो आई थिंक ओवरऑल दिस इज द ओनली थिंग दैट इज कीपिंग मी सेन। बाकी वेरी टफ डे एट द ऑफिस, बहुत बड़ा लॉस और बहुत ही बिग विक्ट्री फॉर एटलेटिको। व्हाट्स योर टेक? I agree. The very fact, my only take about the match was it was all about intent. So every time जब फाइट एक डुएल हो रहा था, राइट, एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड के बीच में, और उस डुएल का रिजल्ट ये हो रहा था कि बॉल इज लाइंग देयर, राइट, लाइक फिजिकल डुएल हुआ, बॉल इज आउट देयर. So Real Madrid players were not getting up again to fight for that ball, right? Every time an Atletico Madrid player, even after that 50% duel, they put in that additional 1% और वो lose ball को फिर लेने के लिए वापस उठ रहे, right? So that was quite evident in the match that it was all about the fact that how brutally do you want to win that match, right? राइट, It राइट। somehow felt कि Real Madrid इतने इस intensity के साथ नहीं आए थे उस स्टेडियम में. I also take it a bit on the coach, Xabi Alonso. क्योंकि 5 गोल जब तुम्हें पड़ते हैं, then it's not a fault of one player or two player or three players. It's the fault of the overall system, right? From what I know, was Bellingham needed in this match?
आई थिंक उसका फर्स्ट मैच आफ्टर इंजरी था, राइट? हम्म, फर्स्ट मैच आफ्टर इंजरी, यू हैव अ सिस्टम एंड वो एक लेवल पे वर्क कर रहा है, राइट? हम्म, इस लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है दैट यू प्ले अगेंस्ट वन ऑफ द टॉप साइड्स इन यूरोप और अपकमिंग टॉप साइड्स इन यूरोप फॉर दिस सीजन, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड इज आल्सो स्ट्रगलिंग, बट यू कांट प्ले अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड और एक रिटर्निंग प्लेयर को डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट, राइट? द राइट, सिस्टम वाज राइट, वर्किंग फॉर यू, तुम्हें उस सिस्टम को ट्रस्ट करना चाहिए था, उन प्लेयर्स को ट्रस्ट करना चाहिए था और फिर कंटिन्यू करना चाहिए था उनके साथ। सडनली बेलिंगम वाज इन द लाइनअप, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। यस ही इज अ ग्रेट प्लेयर, यस ही इज गुड, ही इज क्लास, बट गिव हिम सम टाइम, राइट? अब राइट, you can't go ahead and say that Bellingham had a bad game. He had a bad game, but you can't say go ahead and blame it on Bellingham, right? कि उसने ये सारी चीजें नहीं की। One more thing that came out was who, like a question to be asked was who is the one providing creativity in this team? सो मेरे अकॉर्डिंग वहां पे बिल्कुल एक गैप है कि हु इज दैट पर्सन, राइट? क्रूज था, पहले मॉड्रिच था। सो पहले रियल मैड्रिड के सिस्टम में इसका डर ही नहीं था दैट हु इज योर क्रिएटिविटी प्रोवाइडर, राइट? बेलिंगम वाज कमिंग बैक, आई डोंट थिंक आई वुड से बेलिंगम एज ए प्योर प्योर क्रिएटिविटी प्रोवाइडर वाला प्लेयर अभी राइट नाउ, राइट? There is too much reliance on maybe just a single player right now who is Arda Güler maybe, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, right? So overall that system was missing in the sense that can you compete at the top level? Do you have backup for a player in case he's not performing well, right? Do you have the intensity to win the ball, right? So too many questions, and all questions point out to one part, which is right now the coaching aspect of it, right? I know the team will evolve the first half here, or the team will get better, but at this moment, maybe the team was not prepared for a European elite club kind of a competition coming up in that intensity at their home, right? Maybe मैड्रिड के होम पे ये इंटेंसिटी नहीं होती, बट रियल मैड्रिड के होम पे, बट एटलेटिको मैड्रिड के होम पे वो इंटेंसिटी थी, wherein they cashed in, I would say. But I did not expect them to cash in at this level. 5-2 is too brutal a result. Happy as a Barca fan to see Real Madrid fumble. But yeah, too brutal result. नहीं, सो ऑन योर जूड बेलिंगम वाला पॉइंट, आई एग्री कि जूड इस गेम में नेसेसरी नहीं था टू स्टार्ट, क्योंकि आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग फॉर चैबी अलोंसो कि इफ यू हैव अ विनिंग फॉर्मूला, अभी तुम्हारे 7 मैचेस में 7 विंस थे, इफ यू हैव दैट फॉर्मूला, तो देन व्हाई रिस्क इट, स्पेशली इन अ बिग मैच? ठीक है, एंड इस गेम के अंदर Correct? वो चीज दिख भी रहा था कि जूड इज ऑफ द पेस, वो चीज दिख रहा था कि जूड इज नॉट rhythmically and also physically and mentally not there yet, right? तो आई थिंक स्पेशली इस गेम में ये चीज एलिमेंट बहुत दिखा कि हमारी जो प्रेसिंग अभी तक हमें जो जिता रही थी मैचेस में, जो हर चीज में हर मैच में हम बात करते थे कि प्रेसिंग बहुत इंप्रूव हो गया है, राइट? एंड अ की एलिमेंट ऑफ दैट प्रेसिंग इज फ्रांको, राइट? वो कॉन्स्टेंटली भागता रहता है एंड इज हिज एनर्जी इज ऑल्सो इन्फेक्शियस ऑन टू अदर प्लेयर्स एज वेल। तो वो चीज प्रेसिंग की मैनरिज्म्स में भी दिखा कि समटाइम्स प्लेयर को लग रहा है कि अभी प्रेस करना है, नहीं करना है, कुछ हाफ 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 एस अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, राइट? तो उस सेंस में वो चीज दिखी है कि आई थिंक जूड को शुरू शायद नहीं करना चाहिए था। जूड कुड हैव बीन दैट इम्पैक्ट प्लेयर लाइक कामाविंगा, राइट? सो आई थिंक वो पॉइंट पे आई एग्री कि चाहे शायद जूड की जगह फ्रांको शुरू करना चाहिए था। On your second point, on tactics, I think yes, tactically gaps the, but I think uh, if you look at the motivational levels as well, वो उनकी motivation levels ही different थे. I think every aerial duel, I think Atletico players were winning. जो उन्होंने क्रॉसेस कॉन्स्टेंटली डाले जा रही थी, उनकी एक ही गेम प्लान थी कि विंग्स पे पुश करो अपनी बॉल को, उसके बाद क्रॉस करो किसी तरह। दे हैड सॉरलॉथ एंड अदर प्लेयर्स हु वर क्रैशिंग इनटू द बॉक्स। Correct. But having said that, you have a center back pairing of Dean, Militao, and Tchouameni is also dropping. So you shouldn't expect an elite club and elite level players not be able to defend your crosses, ठीक है? तो वो आई थिंक एक मोटिवेशनल लेवल पे भी उस पे तुम जावी की गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो Correct. प्लेस ही कर सकता है, राइट? सो आई थिंक जूट को Correct. भी खिलाने का रीजन एक प्रोबेबली वो हो सकता है टू फॉर दैट एरियल थ्रेट, बट इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू हु वांट्स टू विन दैट हेडर फर्स्ट। आई थिंक वो एटलेटिको प्लेयर्स Correct. जीत रहे थे, एंड आई थिंक स्टार्टिंग के 2-3 गोल्स तो सारे उनके क्रॉसेस 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 पे ही आ रहे थे। तो आई थिंक Correct. एक वहां पे मिस था कि वो डीन ह्यूशन और ट्यूमेनी वर नॉट एबल टू
protect the box. Correct. In fact, first goal में I guess there were three players out there. Hmm. और फिर भी वो header पड़ गया. So हाँ. I I think think Madrid yeah, was not bad. our man literally Yeah. bodied Tchouaméni in the first goal. So you shouldn't expect that from an elite player, at elite defender, right? So I think एक motivational level पे भी lacking था चीज. Correct. And I think credits where it's due to Atletico Madrid as well, right? Even in the match against Liverpool, it felt like that, Liverpool will dominate as a first 7-8 minutes में उनके 2 goal आ गए थे. It felt like it Hmm. would be a rout, right? But to me, even while watching the match, ऐसा लग रहा था कि it is कि अभी एटलेटिको मैड्रिड स्विच ऑन नहीं हुई है, राइट? एंड व्हेन दे स्विच्ड ऑन, they gave, I would say, probably one of the top clubs in Europe, right? Maybe top three के contenders, right? A run for their money. They won in extra time, right? So I think Atletico will grow as the season progresses, and it all points toward the fact that La Liga is probably might eventually become a three-horse game now. Hmm. हाँ, आई थिंक इट इवेंचुअली विल बी। एटलेटिको मैड्रिड आई थिंक अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उनकी एक कांस्टेंट स्ट्रैटेजी रही है कि दे हैव स्टार्टेड द मैच वेरी वेल। तो स्टार्टिंग में अटैक करने का उनका इंटेंट रहता है और इस मैच में भी थोड़ा बहुत दिखा। बट आई थिंक ओवरऑल अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स फॉर मैड्रिड। आई थिंक हम बात करते हैं कि मैड्रिड की अब जैसे यूथ भी प्रमोट हो रहा है ना? थोड़ा यूथ भी आ रहा है, थोड़ा नया सिस्टम भी है, चाबी अलोंसो का एरा है। But I think while implementing ideas, some players also need to understand that they shouldn't make schoolboy errors, right? जो penalty Atletico को मिली, वो आर्डा को although he won the ball first, but वो high boot penalty area के अंदर you shouldn't be doing, right? As Correct. an elite player, right? तो I Correct. think वालवर्डे का भी जो लास्ट गोल था आई थिंक एटलेटिको का, वालवर्डे गेव द बॉल वेरी वेरी सॉफ्टली। तो आई थिंक कुछ-कुछ ऐसे एंड आल्सो द फ्री किक जो हुलियन एल्वारेज ने Julian मारी है, Alvarez. उस पे जो फाउल What a था free kick. दैट वाज़ आल्सो अ वेरी सॉफ्ट फाउल, शुडन्ट बी मेकिंग दैट फाउल। तो आई थिंक थोड़े Correct. स्कूल बॉय एरर्स भी थे। द प्लेयर्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग आइडियाज़, ये स्कूल बॉय एरर्स तो एट लीस्ट वी शुडन्ट बी डूइंग। I think another negative is the injury, possible injury. I think Carvajal की तो आ गई है officially. I think he's out for another month. Militao is also probably injured. Carvajal, also Trent. We don't have a right back for another month. I think another month के अंदर the fixtures that are lined up are Juventus, Liverpool away, Barcelona. So we don't have a right back. So so tough We don't times have a ahead. left back. So okay. बट तुम्हारे पास वो तो है ना, क्या नाम है उसका, मार्टिन। Gerard Maldini. He's not Gerard माल्डिनी। Martin. He's Gerard Maldini. बट आई थिंक हमारा ऐसा होगा कि वालवर्डे विल अगेन हैव टू शिफ्ट टू राइट बैक, व्हिच विल अगेन डिस्टर्ब द मिडफील्ड डायनामिक दैट वी हैव। फिर वही लास्ट ईयर वाली प्रॉब्लम्स आएंगी आई थिंक मिडफील्ड के अंदर, बट लेट्स सी हाउ। तो आई थिंक वो Correct. ओवरऑल नेगेटिव थे। द ओनली पॉजिटिव दैट आई एम टेकिंग आउट ऑफ दिस मैच इज हमारा जो फर्स्ट गोल था। आई थिंक हमारा फर्स्ट गोल से मुझे ये दिखा, इट वाज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। तो it gives me some sort of hope that against the run of play, that Arda and Mbappe combination is like a cheat code. वो कुछ भी नहीं था, Hmm. we were doing nothing in the match. Suddenly Arda, Mbappe gets the ball, वो एकदम ले ऑफ करता है आर्डा को एंड आर्डा मेक्स द थ्रू बॉल और वो सीधा गोल, मतलब वो इट केम आउट ऑफ नोवेयर। तो आई थिंक वो एक चीट कोड मुझे दिखा है जो विच कैन बी वेरी डेविस्टेटिंग फॉर टीम्स एंड यू कांट स्टॉप दैट गोल। तुम रोक नहीं सकते, Correct. एम्बापे की पेस को भी नहीं रोक सकते और वो थ्रू बॉल भी बहुत परफेक्ट थी। तो आई थिंक दिस इज़ द Correct. ओनली पॉजिटिव आई एम टेकिंग आउट ऑफ दिस मैच। बाकी क्वाइट अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फॉरगेट। Correct. Correct. And I think it gives us as Barca fans a good chance to kind of come back to the top of the table. We हुँ। have our next match अभी रियल सोसिएडेड के साथ होम पे है, तो एटलीस्ट स्टेडियम वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। 7 रियल गोल मारोगे, सोसिएडेड 8 गोल मारोगे? कितने मारोगे भाई? नहीं, तीन बहुत है, अभी 3 रफीना 3 इंजर्ड हो गया ना, तो तीन बहुत है। हुँ। 3-0 इज व्हाट आई टेक आउट फ्रॉम दिस मैच। सो नहीं मेरे को लग रहा है कि आज 8 8 या 9 गोल मार देंगे नहीं नहीं, और वो आई रफीना चला गया ना।
ओ चल ठीक है, 5-6 कर लेते हैं, चल ठीक है, तो ना तेरा ना मेरा, चल। चल मैं 5 का सेटल कर लेते हैं। हाँ, बाकी आई थिंक अभी ला लीगा में यू हैव द हाईएस्ट गोल डिफरेंस, यू आर एवरेजिंग आई थिंक मोर देन 3 गोल्स अ गेम, तो आज शायद Expected बार्सिलोना from a कैन गो Barca टॉप। side. Expected from a Barcelona side. However, uh, the challenge for Barca today will be comeback of Chesney, as in Joan Garcia is out. So that will be a good thing to watch out for, given Garcia has been a difference maker. So I guess Chesney ka comeback will be an important thing to look out for.